Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Shukla. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर के आए हैं आपके लिए आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई खबरें और हम उन खबरों पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में। लालिमा। Thank you, Nikhil. Yes, the headlines first. Coal Ministry has clarified that there is adequate availability of coal for thermal power plants, TPP, of the country. The Sensex gained 205 points to close at 66,795. Nifty also up 37 points to settle at 19,749. Global crude oil prices were steady today. Brent crude was at $78.43 and West Texas Intermediate was at $74.15 per barrel. कोयला मंत्रालय ने कहा, देश के थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले की पर्याप्त उपलब्धता। सेंसेक्स 205 अंक की बढ़त के साथ 66,795 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक चढ़कर 19,749 के स्तर पर पहुंचा और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत आज $78.43 प्रति बैरल के आसपास रही। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. और स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। और तमाम आर्थिक खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुषमा रामचंद्रन जी, जो कि हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि देश के थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले की पर्याप्त उपलब्धता है। आंकड़ों के अनुसार 16 जुलाई 2023 तक थर्मल पावर प्लांट का कोयला स्टॉक 33.46 मिलियन टन है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 28% अधिक है। खदानों में पिटहेड कोयला स्टॉक, पारगमन में स्टॉक और थर्मल पावर प्लांट सहित सभी स्थानों पर कोयले की उपलब्धता पिछले वर्ष के 76.85 मीट्रिक टन की तुलना में 103 मीट्रिक टन है, जो करीब 34% ज्यादा है। मंत्रालय सभी केंद्रीय जैनको और राज्य जैनको के साथ भी समन्वय कर रहा है और बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की कोई कमी नहीं है। रेल मंत्रालय द्वारा सभी सहायक कंपनियों के लिए पर्याप्त रैक उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे थर्मल पावर प्लांट में कोयले के स्टॉक की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। Hello, Sushma. Hello. Yes, so how do you view this, the fact that the Coal Ministry has clarified that there is adequate availability of coal for thermal power plants? First of all, how important it is, Sushma, now that the government is also making a foray into the renewable energy? That comes later, but how significant is coal for the Indian economy? How much are we dependent on it? Well, first of all, of course, it's very good news that no thermal power plant has been closed due to availability of coal. I mean, this is a time when you have a peak power demand. The summer is the time when power demand goes at its peak. And since the monsoons, we are still, have not really filled they have, of course, filled the reservoirs, but it's going to continue. You will have the full impact in the hydro generating plants only in a month or so. So the demand or the requirement will be met largely by thermal power plants. And the fact that coal availability is adequate is certainly comforting. The other thing that the government has done is to ensure that plants which are running on imported coal are also running to full capacity so that there is sufficient power availability. As far as coal is concerned, coal is the primary fuel for this country. I mean, we of course rely on
we rely on hydrocarbons, that is crude oil as well as natural gas. But the most important fuel for the industrial sector is coal. And therefore, when you asked what is, how important it is critically important. Of course, the government is trying to ensure that we bring down our dependence on coal, simply because we all know that coal is a highly polluting fuel, and to reduce carbon emissions in the long run, we have to cut down our reliance on this very important source of energy. But for the time being, till such time as we can shift gradually, because this is a long-term effort, obviously. Right. We are making with, big, very ambitious targets have been made in the area of non-renewable energy sources. But this is a process that will take time. It is for the long run. सुषमा, आपने जो बातें बताई वाकई बहुत ही अच्छी बातें हैं, वो जिनको सुनकर के लग रहा है कि एक जो वे है आगे बढ़ने का डेवलपमेंट की ओर, कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार जो योजनाएं सरकार ने बनाई है उनका लाभ हमें मिल रहा है। और अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल से 16 जुलाई 2023 तक कोयला उत्पादन 258.57 मिलियन टन रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 236.69 मिलियन टन रहा था, जो देखा जाए तो काफी अच्छा उत्पादन रहा है। और सबसे खास बात यह है कि हमारे देश में मानसून का ऑलमोस्ट 1 महीना हो ही चुका है और इस बीच में भी बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। तो गवर्नमेंट ने जो योजनाएं बनाई हैं कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए और डिपेंडेंसी भी कम से कम की जाए लेकिन उत्पादन भी बढ़ाया जाए, तो इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोयले का उत्पादन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। उससे साथ साथ हम सरकार कोशिश यही कर रही है कि इसका जो इसकी कोयले की जो क्वालिटी है वो भी बेहतर बनती जाए, और इस वजह से उन्होंने कोल वॉशरीज बनाई हैं। वो पावर प्लांट्स के पास भी हैं, कोयले के उत्पादन के जगह की वहां पर भी लगाई हुई हैं, और इसका लाभ हमारे मतलब आम जनता के ऊपर है कि जो कोयला इस्तेमाल करता है उससे कम कार्बन एमिशन होंगे। दूसरी बात ये है कि जो कोयले की उत्पादन है इस वक्त हमें, जैसे मैंने कहा, हमारी जो रिलायंस है थर्मल पावर प्लांट्स की इस वक्त बहुत ज्यादा है। आगे के दिनों में जैसे अगस्त सितंबर में हम हाइडल जनरेटिंग प्लांट्स के ऊपर निर्भर होंगे और उनसे भी बिजली की उत्पादन बढ़ेगी। लेकिन इस वक्त ये जो मई जून जुलाई है, जब पीक डिमांड होती है, तो थर्मल पावर प्लांट्स की हमें बहुत, और वहां से जो बिजली आती है उसकी बहुत जरूरी है, उसकी जरूरत बहुत पड़ती है। ये उद्योग के क्षेत्र में भी और ये दूसरे क्षेत्रों में भी कोयले की बहुत जरूरत होती है। तो इस वजह से जो उत्पादन है वो बहुत, कोयले की उत्पादन, और खासकर अगर हम देखें कि ये पब्लिक सेक्टर कोल इंडिया, इसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोयले के उत्पादन के लिए, और मेरे ख्याल में उन्होंने काफी अच्छी तरह से अपनी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है निभाई है। और इसी वजह से अगर हम देखें कि कोयले के जो स्टॉक्स हैं हर थर्मल पावर प्लांट में इस वक्त काफी बेहतर है। Sushma, monsoon comes every year, and this year also we are facing monsoon. Is the government ready to cope with the monsoon season as far as coal is concerned? For example, coal companies have undertaken construction of cemented roads for uninterrupted evacuation from larger mines. Also, transportation from 9 coal mines to railway sidings have been started through mechanized coal handling plants. Is the government geared up for all the extra effort that is required to keep the coal supply going despite the monsoon? There were concerns a few years ago about the fact that, first of all, whether we were having enough coal output to meet our requirements. Subsequently, Coal India and its subsidiaries stepped up production in the last 3 or 4 years.
and new captive coal mines as well as other coal mines have been utilized to ensure that coal output has been increased. Now, the other infrastructure that you're talking about, that is critical also, because unless the coal is brought to the washeries, brought to the power plants, it is they are brought to the coal washeries, and they are made in a suitable, brought in a suitable condition for use by the captive power plants. All this is required. The other thing that is very essential is coordination with the railways. And this is something that I must say in the past has not always been of the best. It is true that there have been times when there has been a mismatch between the availability of rakes with the railways and the places at which coal stocks have been piled up. But this in recent years, once again, this has also improved considerably. The coordination between Coal Ministry and the railways has improved a great deal, and you find that there is very little problem. Otherwise, there used to be, if you would see in the business press, there would always be these stories saying that, Coal Ministry is complaining there's not enough rakes, and the Railway Ministry is saying that, we are not able to pick up stocks when we go. Yeah. So don't find that kind of news coming in the papers now. This kind of coordination, the coordination is vastly streamlined, and of course this kind of infrastructure you talked about, that is also absolutely essential. सुषमा, आपने कहा कि मतलब जो हमें बातें बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक बात तो मेरे ध्यान में और आती है कि सरकार का पूरा फोकस जो कोयला उत्पादन बढ़ाने पर है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आयात पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इंडिया में जो बिडिंग की बात होती थी, पहले काफी ट्रांसपेरेंसी की कमी महसूस की जाती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी पर पूरा ध्यान दिया। अब एक एक जो माइंस की बिडिंग होती है उसके बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो जाती। तो इस तरह के जो कदम उठाए जा रहे हैं उनसे हमें कितना लाभ हुआ है? इनसे बहुत लाभ हुआ है। अब आपको मालूम ही है कि पहले ये तो अब 8-9 साल पहले की बात है कि जब ये ऑक्शंस के ऊपर काफी हंगामा हुआ था, ये एलोकेशंस ऑफ कोल माइंस के ऊपर काफी चर्चा हुई थी, लेकिन वो सारा सिलसिला जो है वो अभी खत्म हो गया है और अब पूरी जो प्रोसेस है काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही है। और इससे ये फायदा है कि हमारे मतलब ये ऑर्डिनरी टैक्स पेयर जो है उसको लगता है कि जो पैसा लगाया जा रहा है सरकार का वो बिल्कुल ठीक तरह से लगाया जा रहा है, इन द सेंस कि जितना पैसा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो खरीद रही हैं कैप्टिव कोल माइंस को, वो ठीक जो रिक्वायरमेंट है ऑफ पेमेंट वो उतना ही है और काफी रेवेन्यू भी इससे आता है। तो ये तो काफी बहुत ही ज्यादा स्ट्रीमलाइनिंग हुई है इस पूरे सिस्टम की। Right, let's take a look जी हाँ, at the थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। stock markets now, बिल्कुल, Nikhil। शेयर बाजार की खबरों पे हम नजर डाल लेते हैं। घरेलू शेयर बाजार आज लाभ के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 66,700 अंक से ऊपर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,700 के स्तर से ऊपर जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 205 अंकों की बढ़त देखी गई और ये 66,795 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी भी 37 अंक के उछाल के साथ 19,749 पर आ गया। विस्तृत बाजार की हम बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.18% गिरकर और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.47% नीचे आकर बंद हुए। Key domestic indices today closed with positive mark. The Sensex at the Bombay Stock Exchange finished above 66,700 points, while Nifty at the National Stock Exchange ended above 19,700 level. The Sensex gained 205 points to close at 66,795. Nifty also up 37 points to settle at 19,749. In the broader market at the BSE, the mid-cap index declined 0.18% and the small cap fell 0.47%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 20 firms appreciated while 10 depreciated.
Among the top gainers, Infosys inched up 3.6%, followed by Asian Paints that climbed 1.5% and HCL gained 1.1%. On the other hand, SBI declined 1.4%, Titan and HDFC Life both fell 1.1% each. In sectoral indices at the BSE, 9 sectors logged gains while 11 witnessed losses. IT sector and tech sector both surged 1.1% each. Capital goods sector indices rose 0.4%. On the other side, metal sector declined 0.9%, realty index fell 0.8%, and telecom sector slipped 0.6%. The overall market breadth was positive as shares of 1,413 companies rose while 2,011 fell. A total of 124 shares remained unchanged. Sushma, we are seeing a remarkable gaining of the Sensex for the last few days. The rallying is actually boosts a lot of confidence, not just amongst us, the Indians, but also investors from abroad. How do you see the Sensex gaining today 205 points to close at 66,795? Is it a bubble waiting to burst, or how far will this rally go? What is your assessment? No, I don't think it's not a bubble, but it is the reasons are very obvious. First of all, the foreign institutional investors have been reposing a lot of confidence in the Indian economy, and they have been the inflows. In fact, for the last 5 months, there has been net inflows from FIIs. And I think in June, probably, June itself, I think about $5.7 billion has come in from foreign portfolio investors. So that has infused a lot of confidence. Now, the reason for this, of course, is that there is obviously sluggishness in the Chinese economy, so there is attention being focused here. And also the fact that in the U.S., it looks as if the interest rate cycle is going to abate probably in the next policy meeting. There's an expectation of another rate hike, but there is now a likelihood that probably it may not be there in September because of the moderation of inflation moderating. And then finally, of course, the basic fundamentals of the Indian economy are looking bright. Various foreign agencies, I mean, leave alone domestic, forget the Reserve Bank of India or Government of India itself, foreign agencies have made very positive projections on the growth rate for India, yes, showing that it is likely to be the fastest growing major economy in the world. So these are the factors that have propelled the FIIs to come here, and with the FIIs coming in, you are having this kind of bullish run on the market. So it's not a bubble. Certainly there will be some profit taking. I think today was largely profit taking. Barring probably Infosys, there was not much market breadth as far as the increase was concerned. So you will have some amount of volatility in the days going ahead. But more or less, if this is the outlook, then one can expect a general upward trend in the market, a general bullish trend in the coming months. सुषमा, जिस तरह से सेंसेक्स ऊपर चढ़ रहा है, निफ्टी भी ऊपर चढ़ रहा है, और हम ये भी देख रहे हैं कि दूसरी ओर आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर, ये ऐसे 4 प्रमुख सेक्टर्स माने जा रहे हैं जिनमें लगातार छोटे निवेशक अपना एक उत्साह बनाए हुए हैं. उनका उत्साह डाउन नहीं हो रहा, जबकि और भी लगातार बढ़ता जा रहा है. तो क्या उन्हें इस उत्साह को बनाए रखना चाहिए, या थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है, या कुछ और भी दिमाग में बातें रखी जा सकती हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जो आपने क्षेत्र बताए हैं जी, वो बिल्कुल सेफ है छोटे निवेशकों के लिए. अगर आप देखें आईटी क्षेत्र में उसका इस वक्त काफी उसकी जो ट्रेंड्स बहुत अच्छी है. अभी इन्फोसिस की जो खबर है आज की कि 5 साल के लिए उनको एक वो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम के लिए. जी जी. और अगर आप देखें टीसीएस के अर्निंग्स बहुत अच्छे थे, प्रॉफिटेबिलिटी इस बार HCL के भी बहुत अच्छा था. तो आईटी सेक्टर
बहुत अच्छा कर रहा है। और आप इस हिसाब से भी देख सकते हैं कि जो हमारे देश में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं वो इसमें शायद 40-50% शायद सॉफ्टवेयर का हिस्सा है उसमें, वो अभी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि मर्चेंडाइज ट्रेड की डिक्लाइन अभी हुई है जून में, उसका डिप हुआ है मर्चेंडाइज ट्रेड में, लेकिन सर्विसेज में और इसमें सबसे बड़ी चीज सॉफ्टवेयर है वो बढ़ता गया है। तो आईटी में तो कोई इसमें को जरूर लाभ होगा छोटे निवेशकों के लिए। फार्मा क्षेत्र भी अच्छा कर रहा है और बैंकिंग की जो हमारी जो इंडस्ट्री है इस वक्त स्टेबलाइज्ड है। एनपीएस बिल्कुल सबसे कम है काफी सालों से। जी क्षेत्र मेरे ख्याल काफी सेफ है। हाँ, अगर आप इंडिविजुअल कंपनीज की बात करें, छोटे निवेशकों को जरूर इनको देखना चाहिए कि हर कंपनी एक जैसी नहीं होती है। राइट। म्यूचुअल फंड का जो रूट है वो सबसे अच्छा है। सुषमा, एक इसमें बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, जिस तरह से हम भारतीय शेयर बाजारों में लगातार एक प्रॉफिट का एक रूट हमें नजर आ रहा है कि लोगों को काफी ये बढ़त भी दे रहा है, लेकिन इसमें क्या आप मानते हैं कि जो चाइनीज इकोनॉमी का एक स्लो डाउन देखा गया बीच में, या अभी भी बहुत अच्छी खबरें चाइनीज इकोनॉमी से नहीं मिल रही हैं, बाहर ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं, उनका कितना असर है? क्या कुछ इंपॉर्टेंस है उनकी, या पूरी तरह से डिपेंडेंसी, या कुछ भी नहीं है? नहीं, इसका असर जरूर है, क्योंकि जैसे हमने एफआईआई की अभी बात की, जो एफआईआई वहाँ चीन में निवेश करते थे, अब वहां से थोड़े से हट के अब वो हमारे देश में आके अब उनके जो एफआईआई इन्फ्लोज, इसीलिए मैंने इस चीन की बात पहले भी की थी कि इस वजह से हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी लग रही है जी। हमारी आर्थिक जो आउटलुक है वो बहुत अच्छी लग रही है इस वक्त। So we can say, Sushma, that the twin shocks of GST and demonetization have worked their way out, and the last few years of the reforms which were brought by the government now are showing results. We can, and that has boosted our confidence. We can say that, right? Well, I would, of course, there's no doubt about it that we are weathering the geopolitical storm. I mean, much better than most other countries in the world. Definitely, yeah. If you see inflation, we have been able to moderate. Of course, now the US has also brought it down, but they have not reached their target levels. We have reached our target levels. And most other countries, in Europe, and even, of course, we just talked about China. So, comparatively, India has been able to weather the geopolitical shocks, first of the pandemic and then, of course, the Ukraine conflict, much better than the rest of the world. And that, of course, has been the prudence in the policy making sector. Right. सुषमा, अभी आर्थिक मोर्चे पर जितनी भी खबरें आ रही हैं, भारत से बाहर की खबरों की मैं बात कर रहा हूं, तो अधिकतर खबरों में ग्लोबल मार्केट स्लोडाउन का जिक्र जरूर किया गया है। हालांकि खुलकर लोग इस बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिक्र जरूर कर रहे हैं। तो क्या ये इंडिकेशन है इन चीजों का? देखिए, हाँ, जो बाकी अगर आप देखें मार्केट का वो स्लो डाउन मार्केट, अब जैसे चीन, कल की जो खबर थी कि चीन की जो इकोनॉमिक डेटा बहुत अच्छी दी थी, काफी जो आसपास एशियन मार्केट वगैरह वो सहम गई थी, लेकिन हमारी इंडियन मार्केट उसे सहमी नहीं, क्योंकि उससे हमें फायदा है। हमारे जो स्टॉक मार्केट के जो निवेशक है उनको मालूम है कि अगर चीन की जो खबर है वो अच्छी नहीं है तो वो जो निवेशक है वो हमारी मार्केट में ही आएंगे। तो ये अपस्विंग जरूर हुआ है इस वजह से। और जैसे आपने कहा, वी आर शाइनिंग अमंग वी आर, मेरे ख्याल में ये IMF मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी ये कहा था जी, ये इंडिया इज अ शाइनिंग स्टार इन अ एरिया ऑफ ग्लूम जी। और अब रुपए पर नजर डालते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 1 पैसे मजबूत होकर 82 रुपये 3 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.71 पर था। और अब एशियाई यूरोपीय बाजार की हम बात करें तो एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख रहा। केवल जापान के निक्केई सूचकांक में 0.3% की बढ़त देखी गई। हांगकांग के हैंग सेंग में 2
2% की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स 0.4% नुकसान में रहे। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.3% लुढ़क गया। यूरोपीय शेयर बाजार की हम बात करें तो अंतर दिवसीय कारोबार में यहां तेजी का रुख था। समाचार लिखे जाने तक लंदन का FTSE 100 0.2% की बढ़त में चल रहा था। जर्मनी के डेक्स 0.1% और फ्रांस के कैक 0.2% के लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। A look at the U.S. markets now. U.S. stocks ended higher to kick off the trading week on Monday, buoyed by gains in financial and technology shares as investors awaited the next round of quarterly results this week as earnings season gathers speed. The Dow Jones Industrial Average climbed 0.22%, the S&P 500 index gained 0.39%, and the Nasdaq Composite rose 0.93%. Sushma, talking about the U.S. economy, it has been teetering on the brink of a recession. They've had their own problems like bank failures, debt ceiling, and internal political conflict muddying waters. And it's looking for riskier assets than the sure 5.3% returns of a one-year U.S. Treasury bond. What do you make of the U.S. economy at the moment? About the American economy? Yes, the U.S. economy. Yes. Well, the U.S. economy, despite everything, is doing well because you have the jobless, the unemployment data is still looking good, and inflation is moderating, and the big tech in the U.S., the 6 or 7 big tech companies are doing extremely well, and they command a big share of the market. So, despite all the other political issues that country is facing, the fact is that it is coming back to normalcy. Inflation has come down considerably to about, I think, 3%. Though there will be probably another rate hike because the target is 2%. So they have gone through a difficult time, but it looks like the American economy is kind of stabilizing, and that, of course, is good. Is good for the rest of the world. It is good for India, especially because the U.S. is a very large export market for India. That's right. In fact, it's one of the few countries with whom we have a trade surplus. And so it is all to the good if demand picks up over there. All the indicators are now showing that there's not much likelihood of a recession in the U.S., though there are recessionary trends in other parts. Right. So it looks as if things are looking up. Yes, that's right. A look at the oil prices now. Global crude oil prices were steady today. In intraday trade, Brent crude was trading at $78.43 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $74.15 per barrel when reports last came in. And gold? Gold prices today rose 182 rupees at multi-commodity exchange for August contracts. The precious metal was trading at 59,317 rupees per 10 grams. And silver was at 75,818 rupees per kilogram for September contracts when reports last came in. सुषमा जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी. And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Coal Ministry has clarified that there is adequate availability of coal for thermal power plants, TPP, of the country. The Sensex gained 205 points to close at 66,795. Nifty also up 37 points to settle at 19,749. Global crude oil prices were steady today. Brent crude was at $78.43 and West Texas Intermediate was at $74.15 per barrel. That's all we have for you, friends, in this edition of Market Mantra. This is Lalima and Nikhil signing off. Namaskar.